Good morning, students. My name is Hemlata Yadav, and I am with you, your teacher of this biotechnology class 12th. This is chapter second, designing protein, because this chapter was about protein sequencing, protein particularly related to protein. So in this, we have discussed various types of protein-based products. And now the next topic is designing proteins, protein engineering. Considerable interest exists in the biotechnology industry for the engineering of protein with increased stability. बहुत इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग करने का प्रोटीन को, इंक्रीज स्टेबिलिटी विद एक्सपोज टू हार्श कंडीशंस लाइक एलिवेटेड टेम्परेचर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कि जब उनको किसी भी सॉल्वेंट से एक्सपोज किया जाए या टफ कंडीशंस में रखा जाए तो प्रोटीन्स स्टेबल रहें. तो रिएक्टिव केमिकल्स ऑफन एनकाउंटर्ड the industrial processes. Besides, it is great interest to explore biological adaptation to environmental stresses such as high salinity, drought. और इसके अलावा ग्रेट इंटरेस्ट है कि बायोलॉजिकल एडेप्टेशन को एक्सप्लोर करना to environment stresses such as high salinity, drought, cold. तो abiotic stress में भी टॉलरेट कर पाना किसी भी बायोमोलिक्यूल को बहुत जरूरी है. इसीलिए in order to stabilize your favorite protein, it is essential to know the cause of inactivation. तो आप उनको स्टेबल तभी बना पाओगे जब आप उनको ना जान पाओगे कि वो इनएक्टिवेट किस वजह से होते हैं. Stability in a folded protein is a balance between the stabilizing mainly hydrophobic interaction as the tendency to destabilization is caused by the loss of conformational entropy. तो जो conformational entropy होती है फ्री एनर्जी, उसके लॉस की वजह से ही स्टेबिलिटी बिगड़ती है. और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इसको मेंटेन रखते हैं. तो हमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के बारे में ज्यादा समझना है. The stability of protein is, however, changed by substituting amino acids that either favor stabilizing interactions. इस तरह के अमीनो एसिड उसमें चेंज कर दें अगर हम प्रोटीन की स्टेबिलिटी जब बढ़ देगी है, जब हम अगर उनके कोई अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट कर दें फेवरिंग स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, जिससे कि वो और स्टेबल इंटरेक्शन कर लें फोल्डेड होने पर, और डिस्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन इनएक्टिव प्रोटीन जो करते हैं वो कम हो जाए. इनएक्टिव प्रोटीन को डिस्टेबलाइज करने वाले जो इंटरेक्शन है उन्हें कम कर दें वो अमीनो एसिड्स, और स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन को बढ़ा दें. Numerous attempts have been made on different proteins and enzymes in order to improve the properties for thermal and pH stability, solvent tolerance, solubility, catalytic potency, etc. तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम की हमने प्रॉपर्टीज बदली हैं, थर्मल और पीएच स्टेबिलिटी लाए हैं हम उनमें, सॉल्वेंट टॉलरेंस, सॉल्युबिलिटी, कैटालाइटिक. इवन बिलो एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हमने एंजाइम को इम्प्रूव किया है. सब्टिलाइजिन 27 किलो डाल्टन की प्रोटीएज एंजाइम है जो बैक्टीरिया जिससे डाइजेस्ट कर सकते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोटीन्स को, दैट कॉमनली स्पॉइल द क्लोथिंग, जो क्लोथिंग को बहुत गंदा करते हैं, उस तरह के पेप्टाइड्स को वो तोड़ती हैं. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं. सब्टिलाइजिन इसको 27 डाल्टन की ये है किलो डाल्टन की, इसको इम्प्रूव किया गया है. Enzymatic activity subtilisin is contributed by catalytic triad serine 221, histidine 64 and aspartate 32 similar to chymotrypsin. इसकी enzymatic activity या यानी कि इसका एक ट्रायड अमीनो एसिड का जो कि इसकी एक्टिव साइट पे है, तो इस ट्रायड को
इसी ट्रायड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी रहती है। सीरीन 221 की, स्टिडीन 64 की और एस्पार्टेट 32 की। जैसे क्राइमोट्रिप्सिन में भी 3 अमीनो एसिड का रेसिड्यू था। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल 3 रेसिड्यू विद एलेनिन ईदर सिंगली और इन कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर हम इस इन रेसिड्यूज को एलेनिन से सिंगल, एक ही एलेनिन से रिप्लेस एक अमीनो एसिड को कर दें, या तो इनको कॉम्बिनेशन में करके देखा तो सिग्निफिकेंटली लॉस हो गई सबटिलाइजिंग की एक्टिविटी, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। Subtilisin represent the largest industrial मार्केट फॉर एनी एंजाइम। सबटिलाइजिंग के पास सबसे ज्यादा मार्केट है किसी भी एंजाइम का। To improve the efficiency of laundry detergent, detergent manufacturers supplement subtilizing by their product with various catchy slogans on the detergent works such as stain cutter, biologically active enzymes। सबटिलाइजिंग इस नाम से भेजी जाती है कैची स्लोगन से, क्योंकि इसके अंदर डिटर्जेंट के अंदर ऐसी सबटिलाइजिंग एंजाइम होती है जो स्टेन कटर की तरह काम करती है। बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम है वो। द नेटिव एंजाइम सबटिलाइजिन इज इजीली इनएक्टिवेटेड बाय ब्लीच up to 95%, 90%. Careful studies show that this inactivation was due to oxidation of amino acid residue methionine 222। तो जब देखा गया कि ये वाली एंजाइम ब्लीच से 90% इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि मिथ्योनिन 222 जो है 222 मिथ्योनिन पोजीशन पे जो मिथ्योनिन है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल इन ऑक्सीडाइज हो जाता है ये अमीनो एसिड, तो जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाती है। जब साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस सबटिलाइजिंग जीन इन इकोलाई साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से ये मिथ्योनिन सब्स्टिट्यूट करा गया वैरायटी ऑफ अदर एंजाइम से, तो एंजाइम एक्टिविटी मेजर करी गई इन प्रेजेंस ऑफ ब्लीच। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथ्योनिन 222 विद एलेनिन 222 was the best in terms of activity and stability. Nowadays, many laundry detergent contain cloned, genetically engineered recombinant selected। तो मिथ्योनिन 222 की जगह अब एलेनिन 222 यूज हो गया और उसके अंदर अब इसको कॉम्बिनेशन से बनाने लग गए इकोलाई से। तो इट इज लॉन्ड्री डिटर्जेंट की जो सबसिलाइजिन है वो क्लोन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई से बनती है। देन क्रिएशन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन्स, नए प्रोटीन्स अगर बनाएं तो कन्वेंशनल प्रोटीन्स हैव यूटिलाइज्ड हीट इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया। कन्वेंशन वैक्सीन होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं ये जो यूज हम कर रहे हैं कन्वेंशनल वैक्सीन, ये हीट में इनएक्टिवेटेड हो जाती हैं bacteria, you viruses or the other surface proteins to generate immunity against various specific diseases। ऑफन इसमें हीट एंड एक्टिवेटेड बैक्टीरिया यूज करते हैं, या तो वायरसेस को यूज किया जाता है, उनके सरफेस प्रोटीन्स को यूज किया जाता है ताकि ये एज अ वैक्सीन यूज हो सके और इम्यूनिटी डाल सके हमारे अंदर स्पेसिफिक डिजीज के लिए। ऑफन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये भी देखा गया है कि कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वैक्सीन्स हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स सच एज फीवर। Rarely one has to heard of some of the component like virus actually causing the disease due to the incomplete inactivation। कभी कभी तो इन वैक्सीनेशन का इनएक्टिवेट ही नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो जिस वायरस से इम्यूनिटी बननी थी उस वायरस से इन्फेक्शन भी हो गया और पर्सन को। So since the proteins are main molecules which provide the stimulus for immunity, attempts have been made to engineer proteins have minimum deleterious effects। तो क्योंकि प्रोटीन मेन मॉलिक्यूल है जो वाइड स्टिमुलस देते हैं इम्यूनिटी के लिए, अटेम्प्ट्स में बनते हैं टू इंजीनियर द प्रोटीन हैविंग मिनिमम deleterious effect, जिनके सबसे कम deleterious effect हो। The specific sequence of amino acid in the protein which stimulate immune response are known as epitopes। ऐसे specific effects stimulate करते हैं immune response को, जिसको एपिटोप जिसके ऊपर एपिटोप्स होते हैं। recombinant vaccine based on the selectable epitopes
may provide optimum design scope for micromanipulation, unhindered supply, and safety needed for an effective vaccine. Working on these lines, a novel synthetic gene has been assembled as a first step towards developing a subunit vaccine against hepatitis B virus. Improving nutritional value of cereal legumes. The cereal grains and seeds of the legume constitute a major chunk of dietary protein requirement. तो सीरियल लेग्यूम जो होते हैं सीड्स ऑफ लेग्यूम इनके अंदर मेजर चंक होता है डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट का द सीड स्टोरेज प्रोटीन accumulated throughout the seed development to serve as source of amino acid जो भी हम सीड्स को डेवलप करवाते हैं वो एक अमीनो एसिड का सोर्स की तरह और रिजर्व की तरह भी काम करते हैं सीड जर्मिनेशन के वक्त हाई लेवल ऑफ सच प्रोटीन्स in the seeds would provide enriched amino acids source for human consumption अमीनो एसिड का सोर्स भी है सीड्स क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं however proteins in the seeds would provide an enriched amino acid source to human consumption however deficiencies in seeds of certain essential amino acids render the cereal grains or legumes unsuitable for a balanced diet पर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स में वो लैकिंग करते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और उनकी इतनी एबिलिटी नहीं बन पाई बैलेंस डाइट के लिए और सप्लीमेंटेशन ऑफ डाइट विद एसेंशियल अमीनो एसिड पर अगर हमने एसेंशियल अमीनो एसिड को डाल दिया उसमें सीड्स में तो फिर वो खाने में हमें बैलेंस डाइट का भी पूरा हमारा बैलेंस बनाएंगे obtain from food and cannot be made in the cells for the data from the data in the figure it is apparent that the whey protein is superior to other sources especially with regard to the branched amino acids whey protein ज़्यादा beneficial होता है branched amino acids से isoleucine, leucine, valine, lysine, and trypsin. The branch chain amino acid BCAAs are essential for the biosynthesis of muscle proteins. They help in increasing the bioavailability of high complex carbohydrates. Intake and the absorbed by muscle cells for anabolic muscles building activity. One of the theories is that during exercise, branch chain amino acids are released from skeletal muscles. The carbon skeleton part is used as fuel, as the nitrogen part is used to make alanine, which is then go to liver, where it is turned into glucose for energy. For athletes who want to protect their existing mass, the idea is to take BCAAs enriched food before after exercise. BCAAs reduce muscle breakdown and act as an energy source before and after exercise. Hence, while maintaining the exercise performance and dealing exhaustion of BCAA, BCAA is very important for muscle growth. Nowadays, an entire new area of sports medicine and nutrition prepare and recommended special nutrient drinks which incorporate these principles. In the unit of plant tissue culture, you will need how plant cereals have been genetically engineered for higher nutrient value in terms of protein, vitamins. Biological value measures the amount of protein nitrogen that is retained by the body from a given amount of protein nitrogen that has been consumed. Biological value वो होती है जितना अमाउंट प्रोटीन की नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में रिटेन रहता है और रुका रहता है या एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू जितना प्रोटीन उसमें था it has been observed that biological value of whey protein is higher compared to rice, whey, soya, egg protein. Another index of protein value is the protein efficiency ratio, where PER is used as a measure of growth expressed in terms of weight gain of an adult by consuming 1 gram of food protein. The
efficiency ratio value of the following proteins are arranged in decreasing order: whey milk, casein, rice, wheat. The modern day approach for overcoming the nutritional deficiencies of seeds would be engineered genes that would encode storage protein with more of the nutritional desirable amino acids, either by inserting additional amino acid or substituting existing amino acid with the new ones. Attempts चल रहे हैं इनके अमीनो एसिड्स को चेंज करने के लिए ताकि बैलेंस डाइट से पूरी हो सके और जो अमीनो एसिड्स असेंशियल हैं वो इसमें आ सके. Already been made attempts are already been made on genes increasing the storage genes of maize to enhance its nutritional value. Introduction of entirely novel proteins, highly enriched specific amino acid is also being considered. Essential amino acid profiles of various protein. बहुत सारे प्रोटीन के essential amino acid की प्रोफाइल है. यहाँ पर आपको बहुत सारे अमीनो एसिड की फिनाइलिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन इन सबकी प्रोफाइल दिख रही है. एंड नेक्स्ट now this is the end of the chapter. We have come to the end of the chapter. Question answers have come. So we have discussed this chapter second completely, that how we can make novel proteins, how we can increase the biological value and the protein efficiency ratio, what are the advantages of BCAAs in improving nutritional qualities of protein, creation of novel protein. We also know that what are the improving laundry detergents of Subtilisin, and one last but not least, designing the proteins. How we can design the proteins which according to our wish to fulfill the needs of the consumers. So डिजाइनिंग प्रोटीन के अंदर ये सब आता है, नोबल प्रोटीन बनाना. और आपका ये लेसन यहाँ पर फिनिश हुआ. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. And if you like the video, then please hit the like button. Thank you.